I begin in the name of gracious God, the merciful, the beneficent. Hi dear friends, how are you? Our today video is about the art of characterizations and the types of characters in a play or a novel or any literary work. इससे पहले हम वीडियोस में जो है प्ले के पार्ट्स कर चुके हैं और प्ले के पार्ट्स में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लॉट and then we have made a video about the part of the plot, and this is the second important element of a play or a novel, that is character. And here we are going to discuss the different types of characters. So what is first characters? Plot, the arrangement of events, right? Plot में conflict, and then conflict moves to climax and then anticlimax and then resolved. But ये सब होता किसके थ्रू है? These things, all the part of the plot, are performed with the help of the characters. So what the characters used to perform actions? So characters are used to perform actions. Actions related to conflict, and then solution of the conflict, right? So to perform action, speak dialogues. So these characters speak dialogues, और इन dialogues के जरिए, इन actions के जरिए we come to know about the conflict, and then we see that how the conflict is resolved. Move the plot forward. So characters जो हैं यही प्लॉट को आगे लेकर जाते हैं. ये कभी भी नहीं हो सकता कि प्लॉट में करेक्टर ही ना हो. सो प्लॉट एंड करेक्टर बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर. विदाउट प्लॉट, although Aristotle said plot is the soul of a play, but even then Greeks dramatists paid more attention towards characters. So the characters used to perform action, right? अब इनके types क्या हैं characters के? The most important is protagonist. Protagonist means hero or main character. लास्ट में नहीं है कि ये मेल ही हो. Protagonist can be a female, but this is the main character. अगर एक प्ले में कोई character नहीं है and only one character there is, that character will be protagonist. So the most important protagonist is the main character. Protagonists are also called flexible characters because they have capacity to change. They adopt change. So they are flexible according to the situation. These are also called, protagonists are also called dynamic characters. Means having versatility and dynamic power. So they are not same or there is no monotony in them. कि एकसानियत नहीं होती उनमें. एक dynamic personalities are considered protagonists. Round means रुके हुए नहीं है. They are round. Every time new changes are in front of them and they easily adopt those changes. Complex means they have the complexities. उनकी personality में इतनी variety होती है कि whatever the complex situation is there, they at once adopt that complex situation. So protagonist, flexible, dynamic, round and complex. In our model paper there is a question about flexible and inflexible. इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे क्या पूछा जा रहा है? About protagonist पूछा जा रहा है, right? So these are having the capacity to go through change and there is struggle towards development. And what is development? How to release the tension of the play or novel. और टेंशन किस वजह से होगी?
due to the conflict. So how to resolve the conflict? This is the basic purpose of protagonist, right? So development, they have such a courage to struggle and to have development. Then antagonist. Antagonist means villain or evil power. Whatever the evil power or villain means opposing forces to the protagonist. कि जो protagonist को oppose कर रहे हैं, whatever the protagonist think for the solution of conflict, they try to, antagonist try to create the conflict, and he tried to avoid the solution of the conflict. So antagonists are called inflexible, means whatever the evil characteristics they have, they don't want those evil characters or evil traits could be resolved. They stop the resolution of the evil traits. So that's why they are inflexible. Static. किस सेंस में स्टैटिक? रुके हुए मीन्स कि जो उनकी evil nature है वो उस पर स्टैटिक है, वो उस पर रुके हुए हैं. They are not going to adopt any development. So they are static. Flat. Flat means again whatever the trait means the obvious evil trait, they don't want any change. The next is uncomplicated, means that they are complicated. Uncomplicated बिल्कुल सिंपल से है कि जो उनकी evil nature है वो चाहेंगे वो evil nature चलती रहे, prolong हो, exist करें, और conflict should be the part of the novel or the literary work. So evil characters and do not adopt change. This is the main quality of antagonist. So basically ड्रामा या नॉवल या फिक्शन वर्क क्या है? ये दो करेक्टर्स हैं, मेन प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट. इनके बीच स्ट्रगल, दैट हु इज गोइंग टू विन. इनकी स्ट्रगल का नाम ही प्लॉट है, इनकी स्ट्रगल का नाम ही कॉन्फ्लिक्ट है, और इन्हीं की स्ट्रगल हमें क्लाइमेक्स की तरफ ले जाती है और एंटी क्लाइमेक्स एंड देन डिनोमी और रेजोल्यूशन की जानिब, which are the parts of a plot. So these two are very important parts or types of characters. But अगर आप बाकी जो types हैं उनको ना भी करें, even then these two are the main characters types. बाकी क्या है जो कि having not much importance but necessary to plot. प्लॉट को लेंथी करना है, वी नीड सम मोर थिंग्स, और करेक्टर्स भी डालने होंगे उस प्लॉट में, और उनके जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो क्या है? लाइक द थर्ड यू मे से दैट डिट्रोगोनिस्ट. डिट्रोगोनिस्ट, व्हाट इज डिट्रोगोनिस्ट? दीज आर आल्सो कॉल्ड साइड किक्स. और ये क्या है? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर. सो डिट्रोगोनिस्ट्स or sidekicks are the second most important character after protagonist, right? So protagonist के बाद सबसे अहम जो होता है वो detrogonist, which is called the second important. अगर हम देखते हैं इनमें detrogonist हमारे पास जो नॉवल है सेकेंड ईयर में लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, वहाँ detrogonist who will be Piggy. Piggy can be called detrogonist. And who is antagonist there? Obviously Jack. And protagonist is Ralph. So Ralph, then antagonist Jack and detrogonist Piggy. और अगर हम फर्स्ट ईयर के प्ले को देखते हैं वहाँ कोई ज़्यादा करेक्टर नहीं, there are only two main characters. So there is protagonist Mrs. Maldon. She is a lady. That's why I said कि लाजमी नहीं कि प्रोटोगोनिस्ट कोई मेल ही हो. Whosoever is a main character, whether male or female, that's called protagonist. So there is Mrs. Maldon, protagonist, and her brother Corey.
Professor Corey is, because he's an evil character, so that's why he's antagonist there. The fourth type is tertiary character. Tertiary character. So what the tertiary character? Third most important character. जब प्लॉट में हमारे पास एक फर्स्ट है, सेकंड और एक और बहुत अहम कैरेक्टर होगा, दैट्स कॉल्ड टर्शियरी. लाइक हम देख सकते हैं लॉर्ड ऑफ लाइट्स में सिमंस कैरेक्टर इज टर्शियरी कैरेक्टर, राइट? सो दैट इज द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. सो दैट इज टर्शियरी कैरेक्टर. Then the romantic interest, or it is also called love interest. Romantic interest or love interest. What is the purpose of romantic interest or love interest? These characters are to fulfill emotional balance for protagonists. जो प्रोटोगोनिस्ट की जो डिज़ायर हैं, जो उसकी इमोशनल नीड्स हैं, उनकी फुलफिलमेंट के लिए वी हैव romantic interest or love interest. So this is for emotional balance. Normally हम देखते हैं like some heroine, if there is a heroine, what is that heroine? That heroine is basically romantic interest, emotional balance for protagonists. Next is confident. Confident, as the word shows, have confidence. So confident किस लिए होता है? समटाइम हीरो जो है, प्रोटोगोनिस्ट को अपनी इनर थॉट्स रिवील करनी है, एंड ही और शी वांट्स सम पर्सन जिस पर वो ट्रस्ट कर सकें, रिलाई कर सकें. सो दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट, right? So confident का purpose क्या? Listen the secrets of the main character. Main character mean protagonist, right? And advise protagonist. After listening the secret, या जो भी उनमें conflict चल रहा है main character के mind में, ये उसमें उसको suggestion दे सकते हैं, उसको advice दे सकते हैं. इसमें best example है हमारे पास Hamlet, a play of Shakespeare, very renowned play, so very famous play, Hamlet. उसमें हम देखते हैं Hamlet is the hero. Wherever he feels problem, he discuss his problem with Horatio. So Horatio is there confident. So what I wrote here also, Horatio is confident for Hamlet in the play Hamlet of Shakespeare. Then another type of characters are foil. Foil. So what is the purpose of foil? Contrast of protagonist. कि जो प्रोटोगोनिस्ट के ट्रेड्स हैं, सम टाइम राइटर जो है उन ट्रेड्स को एक्सपोज करना चाह रहा है, और उसमें क्या करता है कि वो उसका कोई कंट्रास्ट लाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ हीरो इज पैसिव, इफ हीरो इज रिलक्टेंट टू टेक सम डिसीजन, तो वो फॉयल एक करेक्टर बीच में डाल देंगे. लाजमी नहीं कि फॉयल जो है वो एंटागोनिस्ट हो. एंटागोनिस्ट अपोज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. एंटागोनिस्ट अपोज करता है जो कुछ प्रोटोगोनिस्ट करने जा रहा है. एंटागोनिस्ट अपोज, एंड दिस फॉयल करेक्टर दे एक्सपोज, राइट? एंटागोनिस्ट अपोज the actions of protagonist, and foil expose or contrast protagonist. As I was telling you कि अगर protagonist is lazy somewhere, तो एक और कैरेक्टर हम वहाँ पर होगा प्ले में या नॉवल में कि जो तेज डिसीजन करेगा, हेस्टी डिसीजन करेगा, क्विक डिसीजन मेकिंग करेगा, सो दैट कि वो कंट्रास्ट बन जाएगा प्रोटोगोनिस्ट का. सो दीज आर 7 मेन टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स इन अ प्ले और अ नॉवल और अ फिक्शन वर्क और स्टोरी. इफ देयर इज सम स्टोरी, लाजमी नहीं कि तमाम कैरेक्टर्स हो, लाजमी नहीं कि इनमें से जो है 5 और 6 हो. इट्स अप टू द प्लॉट के मुताबिक इनमें से चाहे चूज़ किए जा सकते हैं.
So, and remember here, protagonist is flexible, dynamic, proud, and complex. On the other hand, antagonist, inflexible, static, flat, uncomplicated. So these two are the most important. So pay attention towards these two characters at least. Thank you, dear friends.